Hello and a very good morning to all our viewers out there. You're watching the Morning News Show on CNN News 18 and I am Sriya Kundu, here to take you through all the top stories of the day from across the nation and around the world over the next 30 minutes. And well, we begin this segment while taking you to what has been happening in the northern state of Haryana. It's been 4 days since the Nuh incident and unrest still continues in various parts of Haryana. Members of the Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad held protest rallies in several parts of Delhi yesterday and vowed to continue protests. While the Hindu outfits are demanding for release of people from their side, the state government is firm to take stern action against those involved in disrupting peace in the state. Meanwhile, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar has warned of strict action against perpetrators and said that the government won't spare the guilty and has assured compensation to the victims. CNN News 18 has accessed the FIR registered in the case, which stated that it was a well-planned conspiracy where 600 to 700 vandals pelted stones at police at Adbar Chowk in Nuh during the yatra. ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। नूह में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस FIR वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। आउटसाइडर्स का चूंकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है। Now, CNN News 18's managing editor Zaka Jacob spoke exclusively to Haryana Home Minister Anil Vij over the unrest that prevails in the state. Listen in to the conversation. नूह में जो ये हिंसा जो शुरू हुआ, अब लगता है कि हरियाणा के जो बाकी जगह है वहां पे भी ये हिंसा फैल रही है। 6 लोग मर गए हैं। आप कह रहे हैं कि 100 से ऊपर लोगों को आपने गिरफ्तार कर दी, राउंड अप कर दी, 40 से ज्यादा FIRs भी दर्ज किया। लेकिन ये बताइए, 3 दिन से और अलग अलग जगहों पे हिंसा फैल रही है, क्या ये पुलिस और प्रशासन की तरफ से विफलता नहीं है? हम क्यों ये माने कि आप लोगों ने ठीक किया या आप लोगों ने सही काम किया? ये तो पूरी तरह से आप फेल हो गए। देखिए, ये प्राइमरी काम नहीं है। प्राइमरी काम है सारे प्रदेश में शांति को बहाल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और वो हम कर रहे हैं। हमने 30 कंपनियां मेवात में डाली हैं, नूह में डाली हैं हरियाणा की। 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हमने वो वहां पर डाली हैं। नूह में 8 थाने हैं, हमने 8 जोन्स में उनको बांटा है और हर जोन में एक IPS को हमने ड्यूटी लगाई है। पूरी तरह से जो साक्ष्य मिल रहे हैं CCTV से या अन्य संसाधनों से, जो मिल रहे हैं, जो जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनको हम पकड़ रहे हैं। 41 FIR कल रात तक दर्ज हो चुकी थी और 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। 90 के करीब हमने डिटेन कर रखे हैं। हम जांच कर रहे हैं कि उनकी संलिप्तता इसमें है या नहीं है। अगर संलिप्तता होगी तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे। माय प्राइमरी जॉब इज टू मेंटेन पीस। पहला काम मेरा ये है कि वहां पर पीस बहाल की जाए, नहीं लोगों में विश्वास पैदा किया जाए कि पुलिस पूरी तरह से आपके साथ है। आप निर्भीक होकर, निर्भय होकर आप अपनी दिनचर्या करें, आप अपने नहीं विद साहब, लेकिन ये बताइए, पहली चीज, ये नूह की जो स्थिति थी, इस तरह इतना मतलब बुरी तरह इसको कैसे बिगड़ने दिया आपके पुलिस और प्रशासन ने? दूसरी चीज, हमारे पास ये भी जानकारी है कि, और FIR में भी ये लिखा है कि 500 से 600 लोग, एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां इकट्ठे हुए,
उनके पास पत्थर थे, उनके पास लाठी थे, पिस्तौल, स्वॉर्ड्स, सब चीज थे उनके पास। ये इतनी भारी संख्या में इतने लोगों को आपने वहां कैसे इकट्ठा होने अलाउ किया? क्या हम ये ना माने कि ये पुलिस की तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर थी और पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के भी फेलियर थी कि इतने भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए? नहीं, देखिए ऐसा है, बिना तथ्यों की जानकारी के मैं नहीं कह सकता। मैं इसकी जांच कराऊंगा कि क्या किसी के पास इनपुट था, अगर था तो उसने किसको बताया, किस लेवल के अधिकारी को बताया, किस लेवल की घटना होने वाली थी, क्या वहां तक बताया या नहीं बताया। तो हम करेंगे ना जी, उसके बाद करेंगे ना जी, इस बात को करेंगे जांच। में बख्शता तो किसी को हूं नहीं, आप सब जानती हो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा अगर किसी ने कोताही बरती है। लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। हाँ, एक बात जरूर लगती है कि किसी ने मास्टरमाइंड किया है, क्योंकि साइमल्टेनियसली कई स्पॉट के ऊपर हिंसा होना ऐसा कभी दंगों में हुआ नहीं करता जब तक कि उसकी प्लानिंग ना की गई हो। ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने गुड़गांव से पुलिस भेजी और बॉर्डर पर ही उन्होंने गोलियां चला दी। इसका मतलब किसी को पता था कि ये जलेगा और बाहर से फोर्स नहीं आने देंगे। ये सारी बातों की हम जानकारी करेंगे। अगर किसी ने मास्टरमाइंड भी किया है, उसकी भी तथ्यों सहित। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, कई लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं मानता। मैं तो वो बात को मानूंगा जो तथ्यों सहित मेरे सामने आएगी। Now we'll keep a close watch as to what happens in Haryana now. But for now, we're going to shift our focus to the national capital and the ongoing monsoon session in the parliament. When it comes to the parliament, fissures in the opposition have been exposed with regards to the Delhi Services Bill. Parties like the BJD, the YSRCP and the TDP have decided to back the centre's bill, allowing them to pass the majority mark in the Rajya Sabha. But today's test will be about the Lok Sabha, and the NDA comfortably has the majority. But the parties who are backing the bill have been labelled anti-nationals by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. This has earned them the label of being the B team of the BJP and has also raised a question mark over whether these parties will align with the INDIA for 2024. Meanwhile, the government has also listed the Data Protection Bill, which has upset many opposition leaders who walked out of the parliamentary committee meeting on this. It's bound to raise temperatures inside the parliament once again. So what is the reason that your party went all out to support the government on these two crucial issues? Look, the no confidence hasn't even happened yet. We've only in principle made a statement that we find that the no confidence motion itself fairly meaningless at this point in time. So therefore we are, and because it's brought by the Congress, so it's and our whole party is existence is based on non-Congressism. So anything that the Congress party brings to Parliament as a motion, it's impossible for us to, in any case, support that. As far as the Delhi Services Bill is concerned, I haven't spoken yet fully on the bill. The bill was due today for discussion. Inexplicably, the Treasury benches started raising a ruckus, and so Parliament was adjourned. Hopefully, Parliament will have the occasion to debate this bill tomorrow, in which case I will give my entirely well-considered reasoning. The BJD has been equidistant from both the UPA and the NDA. But as far as the centre is concerned, Mr. Patnaik's always felt that it has to be constructive cooperation, cooperative federalism, call it what you may. No state can today be at constant war with the centre and survive and do something for the people. Sir, on one side you're talking about the achievements of Modi government, and we are seeing that opposition parties are not participating in the functioning of Parliament. Do you see this session of Parliament would be fruitful? Where the bills are concerned, they are being tabled. If the opposition does not want to take part in it, it is their loss. Any bill must be debated so that people of the country do not feel cheated. At the moment, opposition is only looking at what can give them TRP and nothing else. So, my feeling is,
These are all theatrics that are going on. They don't really have anything to contribute at the moment. So they are only concentrating on something or the other, which otherwise can be settled in the spirit of democracy by sitting across the table and discussing in the parliament. Delegation is going to meet President today, the same delegation which went to Manipur. That day, when the delegation had come on Monday, a discussion was scheduled. They did not want to discuss. What are they going to discuss in a delegation? Where all have they gone? I don't even know. You have gone to Imphal and come and tell me कि मणिपुर के अंदर ये हो रहा है. I am not going to believe it. Well, we'll keep bringing you the latest from what happens in the Parliament session today. But for now, we're going to slip into a short break. Do stay tuned on CNN News 18 as we bring you all the latest developments right here. दर्ज हो चुकी थी और 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। 90 के करीब हमने डिटेन कर रखे हैं। हम जांच कर रहे हैं कि उनकी संलिप्तता इसमें है या नहीं है। अगर संलिप्तता होगी तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे। माई प्राइमरी जॉब इज टू मेंटेन पीस। पहला काम मेरा ये है कि वहां पर पीस बहाल की जाए, नहीं लोगों में विश्वास पैदा किया जाए कि पुलिस पूरी तरह से आपके साथ है। आप निर्भीक होकर, निर्भय होकर आप अपनी दिनचर्या करें, आप अपने नहीं विद साहब, लेकिन ये बताइए, पहली चीज ये नू की जो स्थिति थी, इस तरह इतना मतलब बुरी तरह इसको कैसे बिगड़ने दिया आपके पुलिस और प्रशासन ने? दूसरी चीज, हमारे पास ये भी जानकारी है कि, और एफआईआर में भी ये लिखा है कि 500 से 600 लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां इकट्ठे हुए। उनके पास पत्थर थे, उनके पास लाठी थे, पिस्तौल, स्वॉर्ड्स, सब चीज थे उनके पास। ये इतनी भारी संख्या में इतने लोगों को आपने वहां कैसे इकट्ठा होने अलाउ किया? क्या हम ये ना माने कि ये पुलिस की तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर थी और पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के भी फेलियर थी कि इतने भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए? नहीं, देखिए ऐसा है, बिना तथ्यों की जानकारी के मैं नहीं कह सकता। मैं इसकी जांच कराऊंगा कि क्या किसी के पास इनपुट था, अगर था तो उसने किसको बताया, किस लेवल के अधिकारी को बताया, किस लेवल की घटना होने वाली थी, क्या वहां तक बताया या नहीं बताया। तो हम करेंगे ना जी, उसके बाद करेंगे ना जी, इस बात को करेंगे जांच। में बख्शता तो किसी को हूं नहीं, आप सब जानते हो। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा अगर किसी ने कोताही बरती है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। हाँ, एक बात जरूर लगती है कि किसी ने मास्टरमाइंड किया है, क्योंकि साइमल्टेनियसली कई स्पॉट के ऊपर हिंसा होना ऐसा कभी दंगों में हुआ नहीं करता जब तक कि उसकी प्लानिंग ना की गई हो। ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने गुड़गांव से पुलिस भेजी और बॉर्डर पर ही वो उन्होंने गोलियां चला दी। इसका मतलब किसी को पता था कि ये जलेगा और बाहर से फोर्स नहीं आने देंगे। ये सारी बातों की हम जानकारी करेंगे। अगर किसी ने मास्टरमाइंड भी किया है, उसकी भी तथ्यों सहित। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, कई लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं मानता। मैं तो वो बात को मानूंगा जो तथ्यों सहित मेरे सामने आएगी। नहीं, इसके तो ये बताइए विद साहब, ये जो हिंसा हमने देखी नू में, उसके बाद उसके प्रतिक्रिया में या उसके रिएक्शन में जो गुड़गांव में Welcome back. You're watching the Morning News Show on CNN News 18, and right now we're going to take you down south, wherein amid demands from Hindu organizations that Kerala Assembly Speaker A.N. Shamsir should apologize for his remarks on Lord Ganesh and for hurting Hindu beliefs,
the ruling CPIM has strengthened its defence for their leader, citing his remarks on Lord Ganesh have been taken out of context. While inaugurating an education project on the 21st of July, Shamsir had said that plastic surgery being an ancient concept is a myth and that Hindu groups who are alleging that Lord Ganesh was the first to get a plastic surgery are propagating false narratives. Over the last week, there has been strong opposition to his comments. The BJP has demanded his resignation and the Nair Service Society observed a Belief Protection Day against the speaker for hurting Hindu sentiments. However, the CPM leader issued a clarification and said that simply quoted from Prime Minister Modi's 2014 speech. I am not against any religion. I am respecting all religious sentiments and religious beliefs. There was unfortunate incident is taking place in Kerala regarding my speech I had made in July 21st at the Kundatnad Assembly segment. We had to promote science because in this Indian context, science should be promoted. Unfortunately, somebody is telling that science promoting Hinduism. They are giving more importance to, they are telling that aeroplane has been invented by Hindu community, and also plastic surgery is at the time of Hindu period. These all are baseless. So I spoke regarding the science. The brain behind this propagation is Sangh Parivar. Look what's happening in India. They are trying to distort the history. They are trying to tamper science. No, Mr. Shamsir should resign immediately. He lost his moral authority because he is sitting in the chairmanship of the assembly. He is the president of the legislative assembly. How can he say such things in a particular community? No, he is saying that this is a myth. All the religious practices are myth, deities are myth. So this is the act of Mr. N. Shamsir is. Nobody can accept this such kind of statements. The leaders, Mr. Mohammad Riaz, Mr. Shamsir, continuously doing this. Their statements, behavior, speeches, hate speech, all these things are against Hindu. Purposefully, CPM is trying to consolidate the Muslim vote bank. ആചാരക്രമങ്ങൾ, അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ, അവരുടെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ, ഇതിലേക്ക് ഗവൺമെന്റോ കോടതികളോ പോലും ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരമില്ല എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. അപ്പൊ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തമാണ്. ചരിത്ര സത്യവും ഉണ്ട്, അതുപോലെ വിശ്വാസ സത്യമുണ്ട്. വിശ്വാസികൾക്ക് ചരിത്ര സത്യം പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിശ്വാസ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രബോധത്തെ മതവിശ്വാസവുമായിട്ട് കൂട്ടി കുഴയ്ക്കണ്ട. ഒരു ശാസ്ത്രബോധവും ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാത്തതാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രബോധത്തെ സാധാരണ മതവിശ്വാസവുമായിട്ട് ആരും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാറില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണഘടനാ പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറെ കൂടി ജാഗ്രതയോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ആ ജാഗ്രത സ്പീക്കർ കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ജാഗ്രത കാണിച്ചില്ല. Well, for our next story, we take you up north. Jammu and Kashmir is witnessing a new dawn. The peace is reaping dividends. 1.27 crore tourists have visited Jammu and Kashmir so far, which is likely to surpass the previous year's record. This has brought a smile to the faces of the business community. Take a look at this report by CNN News 18's Ishan Wani. धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है, धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है, और आज वो रुकावट हमेशा के लिए दूर हो गई. After the abrogation of Jammu and Kashmir's special status, the valley is on the path of progress. Tourism is flourishing and businesses are witnessing 365 work days with no band calls. Everything's open, everybody's friendly and approachable. They're definitely approaching us.
Kashmir is once again back on the map of tourists. Hundreds are dotting the city of Srinagar. According to the government, over 15,000 foreign tourists have visited Kashmir in the first 6 months of this year, which is a positive sign for the coming times. There are no shutdowns and clashes, only peace. All this has made the business community happy in the valley. There is a massive change, of course. Tourism is directly connected with stability. So once you have stability on ground, the impact is, again, like I said, direct. We've had flows that we've never had before. The hotel is running on good capacity, and there is consistency. We are able to predict the lean periods, the strong periods, and so on and so forth. Prior to the abrogation of Article 370, violence was witnessed on the streets frequently. But Jammu and Kashmir is now swiftly transforming into a smart city. There is a new lease of life for the locals as well as tourists who say the change is visible. स्ट्रीट वायलेंस अब जम्मू कश्मीर से समाप्त हो गया है। अब वे लोग नहीं दिखाई पड़ते जो स्ट्रीट वायलेंस के लिए जिम्मेदार होते थे, और वो बेचारे, मैं समझता हूं कि शिकार थे कुछ लोगों के। कुछ ताकतें थीं जो बंद कॉल देती थी यहीं से, कुछ थी जो हमारे पड़ोस से देती थी। कितना नुकसान होता था जम्मू कश्मीर का, आप जरा इस पर विचार करिए। और मैं एक बात बार बार कहता हूं कि सबसे नुकसान गरीब आदमी का होता है। मारा जाता है गरीब आदमी, अंधेरा होने के पहले लोग घर की ओर जाते थे। अब 10 बजे रात को पोलो व्यू मार्केट में अनेक लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। Many believe this is the right time for countries to revoke their advisories which advise people to not visit Jammu and Kashmir. With the return of peace, the government is now planning to open more activities for people of Jammu and Kashmir. During the evening times, you won't have so many people on roads in Srinagar. Today, this river front that has been built by J&K government has people coming to do different activities. Government says that they have been able to bring peace to Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370. They also claim that this has resulted in people living, a life where they can come out in the evening, because generally you won't have a lot of night activities in Kashmir Valley. Similarly, the government also says that the business has been thriving because there have been no shutdowns and band calls, and that has resulted in overall boost in the economy, not just the tourism but also the business sectors and shopkeepers. The government says prior to 9 days after the violence broke out, people stopped coming out because of the situation in Kashmir Valley. But now they say that because of these steps taken by the government, the people have started coming out. Tourists have also increased in numbers, including foreign tourists. At the same time, the business, they say, is also thriving. With camera person Bashir Lone Nishanwani for CNN News 18 in Srinagar. Continuing on that positive note, CNN News 18 brings to you a very inspirational story next. Muktaben Dagli from Gujarat's Amreli district lost her vision to meningitis at the age of 7 and had to drop out of school. But due to her determination to get educated, she convinced her parents to send her to school for the blind. Take a look at this rather motivational story. Rising India brings you a story of Muktaben Dagli, who through her unrelenting efforts and spirit has shown us it is never too late to rise and fight for our less privileged. At the age of 7, Muktaben Dagli lost her vision to meningitis and had to drop out of school. But she was determined that education is the only way to a better life. A resident of Ankadia Nana, a small village near Gujarat's Amreli district, Dagli convinced her parents to send her to a school which was for the blind. It was a tragic news that changed her life. At 14, Dagli found out that one of her friends died after she was allegedly fed poison by her parents for being blind. And after this incident, Dagli decided to serve the differently abled. Dagli was fortunate enough to find a life partner who was in sync with her goals. In 1995, Dagli started the Pragna Chakshu Mahila Seva Kunj with her husband.
a non-profit organization which provides education, food and accommodation to blind girls. आज इस संस्था में 200 लड़कियां हैं, 20 बुजुर्ग माता हैं, 35 ऐसी लड़कियां हैं कि जो अपने आप कुछ कर नहीं पाती हैं, जो मल्टी हैंडीकैप हैं, उनको लड़ाना, कपड़े पहनाना आदि सब उनका जो नित्य क्रम है वो हम खुद कर रहे हैं. Till now, the 61-year-old has shaped the future of over 200 blind girls, and in addition to that, she has also undertaken the responsibility of taking care of people with various disabilities and the elderly who have been abandoned by their families. Her inspirational story won her accolades from Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat podcast. Muktaben Dagli is a recipient of over 50 awards, including the Padma Shri. She is an inspiration to many, and her courage is a reflection of rising India's She Shakti. We at the News 18 network salute Dagli for breaking the barriers and believing in Main Kar Sakti Hu. A story of absolute grit, determination and perseverance. And we will keep bringing you such stories on CNN News 18. But for now, this is a wrap-up from my side. Do stay tuned to CNN News 18 as we bring you the latest developments throughout the day right here.